हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्विटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल। और जैसा कि हम सभी को पता है कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो हैं वो काफी डिफिकल्टी इशू करते हैं व्हाइल दे आर जब अपनी कैट के लिए प्रेप करते हैं। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टुडे वी हैव समवन हु क्रैक कैट लास्ट टू लास्ट ईयर एंड ही विल आल्सो मेंटर यू व्हाइल you will join our program. So let them introduce. So hello sir. Hello, Shaurya. How are you, Shaurya? I'm fine sir. So my name is Akshit. Rustagi. I gave my CAT exam last year, and I was fortunate enough to score 96.1 percentile. As a result of which, I got around 10, 11 IIM calls, and some private colleges such as IIT Ghaziabad Marketing. I also got a call from IIT Roorkee and some colleges of Delhi University as well. And I finally was able to join IIM Nagpur, and currently I am pursuing my internship in between the first and the second year of my MBA. What was your background? Like आप इंजीनियर थे या फिर नॉन इंजीनियर थे काइंड ऑफ? देखो मोस्टली जो इश्यूज आते हैं, मेजर इश्यूज यही रहते हैं कि हमें एक ना स्टीरियोटाइप बना रखा है कि इंजीनियर के लिए कैट क्रैक करना इजी है। इसीलिए हम लोगों को एकेडमिक डाइवर्सिटी या इस तरीके को से भी डाइवर्सिटी के पॉइंट्स हमें मिलते हैं नहीं। तो एज एन इंजीनियर ऑल्सो आई वॉज प्रिज्यूम्ड और आई वॉज स्टीरियोटाइप that my quant will be amazing and my verbal will be on a weaker side. This is the stereotype that everyone do have of an engineer. So even when I joined coaching for CAT, even when I started the preparation for CAT, this was something which I dealt with. Even my fellow mates were like, who were non-engineers or who were engineers, that quant is something which you will be able to do. Focus on English, focus on English, focus on English. And fortunately, my focus turned on to my VRC part because when I started giving mocks, so there is a saying in CAT. I'm not sure whether you guys are preparing with any coaching currently or you are doing it on your own. But there is a saying in CAT that you should give a mock before starting your preparation. उससे होता क्या है कि आपको ये पता रहता है कि आपकी वीक साइड्स कौन से हैं, और जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग साइड्स का आपको पता लग ही जाता है। जैसे ही आपको किसी वीक साइड का पता चलेगा, एक वीक टॉपिक का पता चलेगा, सो यू नो वेयर यू हैव टू वर्क द मोस्ट ड्यूरिंग योर कैट प्रिपरेशन, because you cannot leave your weak side as such. You might be able to leave a question or a so, but you might not be able to leave a complete topic or maybe a set of topics which you might not be able to deal in on the D-Day. So when I started my preparation, I gave a mock, and I remember that I scored around 56 percentile. I gave a mock by the name of IIM Cat. You must all be aware about IIM Cat, Yeah. SimCats. These are very famous mock series. So it was a very horrifying moment for me because I kind of left my job to prepare for CAT, and I was very motivated that this year, so I'll be cracking the CAT or whatever happens, I'll be doing this. And then you get a score of 56 percentile, आंखों से पानी निकल जाता है. And you are like, oh shit, ये तो decision ही गलत ले लिया है मैंने इस फिलहाल तो. But that thing actually made me very clear about okay, these are the issues that I have to deal with. I scored around 36 percentile in VRC, and other sections were around 60 to 70 percentile, and the overall was 56 somewhere around. So I worked very hard in VRC as per the saying, and I was fortunate enough to score 98.5 percentile, almost a 99 percentile in VRC when my CAT result came. So what the point was, or why I actually did discuss this incident is that you have to identify what mistakes you are doing. प्रॉब्लम Yeah. सबसे बड़ी ये है कि जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, सीधे प्रिपरेशन की बात नहीं है, एक बहुत जनरल फेस है. इवन इफ somebody is working or somebody is doing a job in which they want a promotion or doing anything, let's say for that matter, जब तक we would not be able to identify a mistake, we will never be able to identify a solution for it. And to identify a mistake, we have to do something, or we have to take a test. We have to test ourselves on those skills which we are targeting. अगर मैं मॉक देता ही नहीं, अगर मैं बस प्रिपरेशन ही करता रहता, तो मुझे शायद कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा वीआरसी कितना वीक है, या मेरे को पॉइंट में कौन सा टॉपिक नहीं आता, या मेरा डीआईआरआर में मैं सेट को कितने टाइम में बना रहा हूँ. तो पहला पॉइंट तो यही है, और जो जनरल मिस्टेक हर कोई करता है वो ये है कि people do not actually try giving a lot of tests, which is the utmost, which is critical, which is an imperative if you are starting a preparation for any exam, not CAT just for any exam. You have to test yourself for whatever you learn. Yeah. So मैंने एक चीज I heard one interview, I'm not sure, but that was a great suggestion which was given by that particular guy. I'll tell you that as well because I followed that as well during my preparation. So it is advised, or it will work wonders for you if in case you are able to make a mistake or a diary mistake. So you must make a notebook in which you write all the mistakes that you are doing on a particular day when you are giving a mock, and try not to repeat those mistakes when you are giving a mock next time.
This will help you to reduce the number of mistakes or even identify more mistakes as you grow forward. But at the end or eventually, you will be able to make sure that the mistakes that you were committing from the very beginning are reduced to a very less number till the time you will be giving your original CAT exam or till the time you will be reaching the reading. So I also practice this. इसी तरीके से मैंने भी ये प्रैक्टिस करना शुरू करा था. And believe me, when I first gave my mock, 2 से 3 पेज रजिस्टर का भर गया था जितनी मेरी गलतियां मैंने करी थी. And you know, it becomes very tough. So you should never lose your motivation while you're preparing for CAT because it is a very uncertain exam. Exactly. Even if you read a topic, even if you are a champ of time, speed and distance. So fortunately, that is the topic which I was very sure about that कुछ भी आ जाए ये क्वेश्चन तो मैं कर ही दूंगा चाहे जो हो जाए. And I was very afraid of doing a geometry question because I was like ये मेरे को नहीं याद होगा फॉर्मूला वगैरह कि इसका एरिया कैसे निकालना है ये कैसे होगा तो मैं इसमें कितना टाइम दे दूं. What if they ask something which I do not know? So I would not be able to do it in that time because I would not be able to make a formula. Time is very less, no? Yeah. You cannot spend more than 1 or 1.5 minutes in a particular question, even if you have read all the questions. So you have to decide. And what happened on the last day that I was not able to solve the time speed distance question, but I was able to solve the geometry question. Okay. So one very important thing from this is that you cannot leave a topic or you should not leave a topic because what if the topic that you are leaving that is the easiest in the whole exam. मतलब एक ईगो टाइप सा बन जाता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है ये तो करना ही करना है तो ईगो के चक्कर में टाइम वेस्ट होके वो छोड़ ही देते हैं फिर आगे. बिल्कुल ईगो नहीं रखना. ईगो है ही नहीं. सिर्फ करो देखो और चढ़ते चलो बढ़ते चलो. चले चलो तो उसकी तरह ही वो प्रैक्टिस करना है. क्वेश्चन नहीं आ रहा देखा छोड़ दिया तो उससे दिल नहीं लगाना वहां बैठ के ये कैसे भी होगा ये तो मैंने साल भर करा था और ये तो ईगो. कोई ईगो नहीं है भाई. वो भी क्वेश्चन उतने नंबर देगा जितने का आसान क्वेश्चन देगा. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए. बहुत बार क्या होता है आप मॉक्स में जब प्रैक्टिस करोगे यू विल रियलाइज विद टाइम दैट वी आर नॉट एबल टू इवन रीड द होल क्वेश्चन पेपर. हम एक एक क्वेश्चन को करने के चक्कर में क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन जो टफ वाला होता है उस पर टाइम ज्यादा लगा देते हैं. उसके बाद जब हम देखते हैं जब उसके आंसर की आती है कुछ आती है तो हम देखते हैं कि जो लास्ट के क्वेश्चंस थे 22-24 और वो बहुत आसान थे जो हमें देखेंगे और इवेंचुअली परसेंटाइल हमारा डाउन जाता है. तो एक प्रैक्टिस शुरुआत से डेवलप ये करो that you must read all the questions before doing it. If you find a very easy question which you can solve in 15-20 seconds, do it. Not an issue. But you have to make sure that you read all the questions. There is one thing more which I want to add on this actually. So, one faculty told me that someone can only crack CAT if in case he is solving the easiest question at that particular point of time. So what it means is, let's say it is the first 5 minutes of the exam. Then you must find the easiest question of the whole section to solve in those 5 minutes. After that 5 minutes, whatever questions are left, let's say there are 10 questions in an exam, and you solve the first 3 questions, which are the easiest, or let's say you solve the 3rd, 5th, and 8th question. Now, in the next 5 minutes of the exam, you must find the easiest questions in the remaining one, and then you have to solve them. So make this a habit to find the easy questions. A difficult question will also give you the same number of marks. मींस कैट में 50% कैट का उत्तर इजी होता है लेकिन 99% जनता लोग वो इजी क्वेश्चन भी नहीं मतलब कि वो इजी क्वेश्चन भी नहीं वो फाइंड ही नहीं कर पाती. द रीजन इज बिल्कुल लाइक उन्होंने मॉक बहुत कम दिए होते हैं. तो मॉक इंपॉर्टेंट है देने के लिए. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज इसकी उनको अपनी मिस्टेक्स को एक कॉप में नोट डाउन करके रखना है. देन उस मिस्टेक को आगे फॉरवर्ड नहीं ले जाना. वो मिस्टेक खत्म ही कर देनी है. राइट. ओके. सो मैं नेक्स्ट जब आप मिस्टेक लिखते हो ना कहीं पे जैसे अगर आपने आप कोई गलती कर रहे हो जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो फॉर एग्जांपल एंड आप एक बार आप बार आप देख रहे हो कि मैं कवर ड्राइव मारते हुए आउट हो रहा हूँ मेरा आउटसाइड एज लगा. सचिन तेंदुलकर के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. फिर मैंने उसको बार कवर ड्राइव आउट किया था. तो जितने भी क्रिकेट फैंस होंगे उनको याद होगा. सो व्हाट ही ट्राइड टू डू इज ही ट्राइड टू रिड्यूस दैट मिस्टेक. उसको पता था कि अगर मैं कवर पे खेलूंगा तो मैं ये गलती करूंगा. वो खेला ही नहीं और अगले गेम से उसने प्रैक्टिस सेशन में इम्प्रूव करा. तो जब आपको पता होगा ना कि आप ये गलती कर रहे हो जब आपके पास उसका ट्रैक होगा तो इवेंचुअली योर माइंड विल वर्क टू रिड्यूस इट. कौन सा इंसान ऐसा होगा जिसको पता है कि मैं गलती करूंगा उसके बाद वो कर जाएगा. ये कोई वो नहीं है ना माउंटेन ड्यू का ऐड नहीं हो रहा ना कि डर के आगे जीत है. तो यहाँ अगर आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन आपको गलत करवा सकता है एक क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट कर सकता है तो यू विल नॉट रिस्क इट. लाइक यू ट्राई टू डेवलप इट. या श्योर है.
तो सर अपन लाइक अभी से लाइक दिस इज अ मिड ऑफ अप्रैल, सो अभी से कैट एस्पिरेंट्स को क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, लाइक अगर किसी ने अभी स्टार्ट किया है जस्ट, सो विच शेड्यूल दे शुड फॉलो और विच टाइप ऑफ शेड्यूल दे शुड फॉलो? देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि देयर इज नो प्री डिसाइडेड शेड्यूल। तो अगर मैं कुछ शेड्यूल बता भी देता हूँ ना, सो इट माइट नॉट वर्क फॉर 99% ऑफ द पीपल। And one thing, Shaurya, you mentioned that 99% of the people are not able to read even 50% or do even 50% of the paper, which is why 99% number are made. 99 percentile is made just after solving 50% of the paper. So you will see the mark pattern. ना हर बार marks pattern आता है कि इतने नंबर पे इतना percentile, इतने नंबर पे इतना percentile. So you will realize that someone who is scoring around 50% or more than 50% will score 99% in CAT eventually, because most of the people are not able to do that. So you should develop that habit. More than that, the schedule that you were asking. So see, initially you must give a mock. That is what I believe. You must give a mock and then identify your sections. Which is your weak section, which is your strong section, and then decide in which you want to perform well, in which you do not want to perform well, and whatever your goals are. Okay. Now, one thing that I want to add on to it is, let's say we'll start with VRC. सो जनरली लोग वीआरसी में क्या करते हैं कि बहुत सुनी सुनाई बातें हैं, बहुत स्टीरियोटाइप्स हैं कि यू शुड रीड एऑन, एऑन पढ़ते चले जाओ, लगातार एऑन पढ़ते चले जाओ। Exactly. और बहुत सारी बातें हैं कि यू शुड रीड द इकोनॉमिक टाइम्स डेली और हिंदुस्तान टाइम्स डेली। सो उसका रीजन समझो। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैविंग द एबिलिटी टू रीड। तो एऑन का अगर एक एसे होता है, सो इट रेंजेस अराउंड 3000 to 300 3500 वर्ड्स। सो व्हेन यू रीड दैट पर्टिकुलर essay or when you read that particular article daily, you will develop a reading habit. And jab eventually you will, the speed of you reading that particular passage will become very fast, because you have to read a 600 to 700 word passage and then you have to understand it, and then only you will be able to do the questions of that particular VRC. वो ये VRC वैसा नहीं होता कि it is a factual when you just have to find the data in the passage and then you have to write it or then you have to mark it कि एक ईयर दे रखा है, ईयर कहाँ लिखा है वो आपको लिख लिया। You have to infer sometimes, you have to think between the lines sometimes, and to think between the lines you must need to understand what the lines are. Then only you will be able to understand what is between them, or what is something which is not correct, which is not directly conveyed with the words that we are having, but is still a part of the whole lecture. So VRC के लिए जरूरी क्या है कि you should develop a reading habit, there is no doubt about it. But इससे aeon से कोई मतलब नहीं है. Read something which you are interested in for the start, so that you actually start liking or you liking the process of reading. So let's say if I'm very much interested in comic books, I should read about Marvel, I should read about DC comics, I should read about something related to Doctor Strange or anything which relates me to comic books, so that I will find the reading interesting. If I'm starting with the economic times, let's say if I'm start reading about the economic articles, or if I'm start reading about the philosophical articles, the process will get me bored from the very start, and it might happen that I might even lose interest towards reading. सो इवेंचुअली इंटरेस्ट को बनाओ। जब भी आप किसी चीज को, जब आप किसी इंसान को कोई नई चीज ट्राई कराते हो, सो मेक श्योर कि उसका पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। Exactly. उसी के बाद से वो उसको पसंद करना शुरू करेगा, फिर इवेंचुअली ही विल ट्राई न्यू थिंग्स। सो यू शुड नो व्हाट यू लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यू हैव टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट। सो सुपरफिशियल और जो हमारा अपर गोल हुआ, दैट इज वी हैव टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट। एऑन पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, हिंदू पढ़ो, कहीं से पढ़ो, पढ़ने की आदत आनी चाहिए, ये जरूरी है। तो जब एक किसी आप पैसेज को पढ़ते हो ना, तो उसमें सबसे पहले एक वे होता है डूडल लिखने का। तो व्हाट डूडल इज दैट यू राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ फ्रॉम द स्टार्ट। दिस इज व्हाट आई डिड। So whenever you are reading a paragraph, there must be one line or two lines, or there must be one word or two words that you think okay, this is the theme of that particular passage or particular paragraph. You write it from pencil on the right side of the paper, on the left side of the paper. And then when you have completed the whole paragraph or completed the whole passage, then you must collect the thoughts what you have read, so that you will form a coherent understanding of what the whole passage was. Sometimes what happens is when there is a long passage of 700 words, when there is a difficult passage of 700 words, आप एक पैरा पढ़ते हो, उसके बाद दूसरा पैरे पे आ जाते हो, पहले पैरे में क्या पढ़ा वो भूल जाते हो, भूल जाते हैं यार। तो उससे कोई फिर फर्क नहीं पड़ता। फिर आप पढ़ते ही चले जाओगे, आप रिपीट करते चले जाओगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर आपको बार बार रिविजिट करना पड़ेगा। दिस विल इवेंचुअली ईट अप अ लॉट ऑफ टाइम, एंड कैट इज द एग्जाम ऑफ टाइम। उसमें टाइम ही कम है। अगर मैं आपको 3 घंटे की जगह 6 घंटे दे दूंगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो हर कोई पेपर सॉल्व कर सकता है। पेपर का लेवल अच्छा नहीं है, लेकिन टाइम, आप कितना टाइम में कर पा रहे हो। हैव टू बी एफिशिएंट मैनेजर्स। द होल टारगेट ऑफ द एग्जाम इज दैट टू मेक श्योर दैट यू आर एफिशिएंट इनफ
to make sure that you can do the certain task in pressure. Yeah. That is what they want to check. So you have to make sure कि आपका habit develop हो. DIRC में तो यही रहेगा. You want me to answer about DILR as well? Yeah, sure. DLR and then फिर quant at the end. Points. So DILR में आप जितने number of sets solve कर सकते हो. देखो DILR में एक ऐसा topic है जिसमें you can understand the psyche की question आपको किस तरीके से test कर रहा है. So let's say there is a Venn diagram question, then you must understand that they are testing you on that particular topic. So there is a linear arrangement question, so they are testing you on the way you are perceiving the information which is written. So first you need to understand what the question is trying to ask. Other than that, there is no limit to what you can solve on DLR. Someone can even solve 40-50 questions in the whole year and then can crack the DLR. Someone can solve 500 questions and then can also not do well on the DLR. So there is no limit to it. DLR is something which requires a lot of practice. Practice as much you can. Practice as many sets as you can. And then you will what this will do is you will get confidence. Your confidence will increase when you will be able to do 4 or 5 questions. Or let's say you're having a notebook. Or let's say you're having 500 questions in front of you, and whatever question you pick, you are able to solve it. Yeah. This will give you confidence that whatever comes, I will be able to solve it. Or I know that if I will take time solving it, I will leave this question. Because again, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना ही नहीं है. आपको आसान क्वेश्चन सॉल्व करना. Even if you are able to solve 50 questions of the paper, you are sorted. You will score 99 percentile eventually, and you will get a lot of calls from all the IIMs mostly. Exactly. So I want an ABC call. You have to work a little bit harder. But again, if you are able to score 99 percentile, you will be able to get a lot of calls. So ये समझना चाहिए कि हमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं करना है और आसान क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है. तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन मैं कितने टाइम में कर सकता हूँ, आप हमेशा गलत क्वेश्चन में हाथ डाल दोगे. You will eventually put yourself into a wrong question, which will eat up a lot of time, and you will not be able to even see the set which is the easiest, because आपको क्या लगेगा कि अब आप एक सेट में घुस गए हो, आपने 2-4-5 मिनट उसमें बिता लिए हैं, तो यू बी लाइक क्या चलो जो भी टाइम जा रहा है इसको पूरा ही करते हैं. और व्हाट हैपेंस इज कि वो 5 मिनट के 10 मिनट 10 मिनट के 12 मिनट 15 मिनट आपके निकल जाते हैं. तो उसके बाद भी बहुत बार क्या होता है कि आप श्योर नहीं होते कि जो आपने कराया वो ठीक करा. तो जब आपको, और ये कब आपके अंदर एक फैक्टर डेवलप होगा, व्हेन यू विल बी एबल टू फील दैट ओके आई कैन डू दिस क्वेश्चन दिस मच ऑफ टाइम. प्रैक्टिस से. कि अगर आपने उस तरीके का कोई क्वेश्चन करा होगा, उससे मिलता तो कोई क्वेश्चन करा होगा, तो आपको पता होगा कि अगर मेरे को इस चीज पे टेस्ट करा जा रहा है तो मैं इसको इतने टाइम में कर सकता हूँ. एंड देन यू विल डिसाइड कि वेदर इट इज वर्थ स्पेंडिंग दिस मच टाइम ऑन दिस क्वेश्चन और नॉट. Like as we know, पेपर छोड़ने के लिए भी पेपर आना चाहिए. Practice make perfect, so practice is बहुत mandatory for all these. All about practice. And DLR का ये रहेगा. क्वांट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग टिप्स देते हैं कि ये टॉपिक छोड़ दो, ये टॉपिक छोड़ दो, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा. तो व्हाट दे डू इज दे एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स. अब ये तो सबको पता है कि हर साल पेपर का कन्वीनर चेंज होता है. कभी इंदौर होता है, कभी इस बार अहमदाबाद है, कल को कोई और भी होगा, अगले साल कोई और होगा. तो यू नेवर नो जो इंसान पेपर सेट कर रहा है उसका क्या साइकी है, वो आपको किस चीज पर टेस्ट करना चाहता है. हो सकता है उसके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एन एमबीए ग्रेजुएट शुड हैव. And he must include a lot of questions which will test you on statistics. हो सकता है उसके हिसाब से कि DRC is something which, or understanding the comprehension is the most important part of doing an MBA. That you have to understand a lot of reports, you have to understand a lot of case studies, for example. तो वो VRC को बहुत टफ बनाएगा. So ये जो stereotypes है ना, ये सुनने के लिए, बातें करने के लिए, gossip करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि you have to cover all the topics, unless and until that is something जो आप कर ही नहीं पा रहे. बट ट्राई करना चाहिए. शुरुआत से अगर आप एक स्टीरियोटाइप बना लोगे कि अप्रैल से क्या ये तो करना ही नहीं है मेरे को, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे विद टाइम, क्योंकि पेपर तो नवंबर एंड में होगा ना. तो नवंबर एंड तक आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे कि जो आप छोड़ ही दोगे, और कोई सा भी टॉपिक आप मास्टर तो कर नहीं सकते. तो ये इशू है, छोड़ना कुछ नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यू विल मेंटोर देम, राइट? नॉट क्या कहते हैं, आप उनको मेंटर करोगे इस उसमें कोर्स में. I'll be able to help. If let's say there are some issues which you and the team might not be able to solve, they can come to me. I'll be able to help. That's not an issue. और अगर they will get a call from top IIMs or any other top schools, so GDPI का आपको संभालना है, right?
For sure. So we do have amazing plans for that as well. Me and Catpal are having amazing plans for the GDPI part as well. And once we are done with the CAT exam, once we are done with all the calls, which all the people would be having, and then we will be giving them what we have prepared. So believe us, that is something which we have prepared on a very analytical basis, and that will be able to help most of you. Because that is something which helped us while preparation. That Yeah. is something which we did. That is the reason we got converts from a lot of colleges. So that is exactly what we want you to do. And so, what do you think about my initiative? Like CatPar is a initiative for all the aspirants. What do you think about it? It's a brilliant initiative actually. People do end up spending a lot of amount, 20, 25,000 rupees. I won't name it, but there are a lot of coachings on YouTube who are currently functioning and who do advertise their coaching a lot. But they might not be able to deliver the content because at the end you have to study on your own, or at the end you have to follow some YouTube videos. So if in case you are doing that only, then there is no point of actually spending that amount. You can invest that amount in applying in a lot of colleges because MBA colleges, the application forms is another level when it comes to the price that they charge. Yeah. So you must save that amount as well. It will help you in future, and you can do your preparation on the same level. So think decisively. That is what I say. And your initiative is great because this will help a lot of people who are or who might not be able to afford such hefty prices of the coaching. So great initiative, Shaurya. Good luck. Thank you, sir. Okay, sir. Then आपसे फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. And thank you Sure, for your sure, time. sure, Shaurya. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you so much. Okay, so we are done with Topper's talk. So let me introduce my course or what we will provide and why we are different. Okay, so like in our course we will provide you the questions for concept, which is basic to advanced. Okay, after that we will provide you the content to practice. We will have around thousands of questions to practice. Like 20,000 questions I have to do practice around. उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है. So practice की चिंता तो करो ही मत. उसके बाद we will have a weekly basis doubt sessions where we will discuss some strategies and weekly plan. Okay. और हाँ, why we set weekly plan? Because जब आप 40 days 50 days 100 days का जब प्लान देखते हो ना, तो आपके माइंड में एक डर बैठ जाता है कि यार मुझे भी इतना सारा कवर करना है, मेरे पास इतना सारा चीज रह रहा है खाने के लिए. राइट, मेरे पास इतनी सारी थालियां खाने के लिए, मुझे अभी मेरे पेट को इतना सारा खाना है. बट विद वीकली प्लान, with small chunks you will able to eat a single chunk in a single plan. ठीक है. तो इससे क्या होगा, आप अपना नाश्ता कवर करेंगे एक वीक में, देन अपना खाना, देन अपना डिनर, जिससे क्या आपकी स्टडी बनी रहेगी, आपका एक सिस्टमैटिक वे बना रहेगा और आपका हर एक टॉपिक टाइम रिवाइज क्लियर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट चीज है आपकी रिवीजन सेशंस आफ्टर ईच टॉपिक. ठीक है. सो ये है क्या भाई, जो ये आपका रिवीजन सेशंस हैं उसको मैं लेता हूँ. ठीक है. इसमें क्या होता है कि भाई अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, लेट्स से कि हमने परसेंटेज टॉपिक किया और मैंने बोला कि परसेंटेज टॉपिक को आपको 4 डेज करना है. सो फिफ्थ डे में मैं उसका रिवीजन लूंगा. मैं आपको एक छोटा सा वर्बल टेस्ट लूंगा कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें शॉर्टकट कौन कौन से लगते हैं, देन फ्रैक्शन टेबल, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्जन, देन सम ब्रेन बूस्टिंग. ठीक है. जिससे कि आपके परसेंटेज या फिर एनी टॉपिक की आपके दिमाग में वो इजीली बैठ जाएगा. ठीक है. देन आपको टॉपिक वाइज टेस्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं. इस टॉपिक के आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एंड आई विल नॉट डिक्लेयर दिस कि आई विल नॉट रिवील द सोर्स कि हम कहां से प्रोवाइड करा रहे हैं, बट यू विल गेट टू नो व्हाइल यू विल जॉइन आवर दिस इनिशिएटिव. देन one-to-one session if needed, if you feel that you need one-to-one session with me or with our other members, so you can have it. After that, like mentorship from top schools like IIM FMS, as you just saw that he is from IIM itself, and he will also mentor you, and he will take care for your ZD and PI program. So don't worry about that ZD and PI as well. Okay. After that, we will provide you the WhatsApp group where most of the aspirants are serious and they are doing great job. Okay. And doubt solution, like most of the aspirants are wondering कि हमारे doubt solve कैसे होंगे. So your doubt will resolve by video or written form. Don't worry about that. So हम आपको इतना सब प्रोवाइड करा रहे हैं. सर जस्ट कीप इन माइंड, जो भी इसका प्राइस है उसमें GDPI इंक्लूड नहीं है. GDPI आपका अलग से प्राइस होगा.
बहुत उसका रीजनेबल प्राइस होगा, उसकी भी आप चिंता मत करें। सो जो आपका फर्स्ट 20 एस्पिरेंट्स के लिए है वो आपको 20,000 पे करना है। वन टाइम पेमेंट है जिसमें आपको हम ये सब चीज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट 20 एस्पिरेंट्स। आफ्टर दैट द प्राइस विल बी 4,000, ठीक है, फॉर रिमेनिंग एस्पिरेंट्स, ठीक है। सो just think about it and then take your action, because you know that like after cat you will have to fill a lot of colleges form, right? So like money is very important and you should not waste it in an unnecessary thing. Like that's my thing which I want to share, कि आप इसको join करें, you will have a lot to take from it, ठीक है। Thank you and all the best, and at the end please subscribe our channel, and if you have any doubt feel free to put it on the comment box.